Welcome back to Game on Hay. Now, we've adopted, you might have noticed at the end of the last segment, we adopted what was known as a bit of a cliffhanger, a sort of soap opera tactic, leaving you hanging, waiting for the biggest question we're going to hear all night. Sana. तो राशिद लतीफ साहब का क्वेश्चन था कि दो प्लेयर्स थे जो हारिस दो तीन प्लेयर जिसमें हारिस रऊफ जिन्होंने 4 विकेट लेके पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, इस मैच में आसिफ अली जो 25 रन बना के 7 बॉलों पे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था. तो क्या ऐसा चेंज हुआ? अगर आप जवाब नहीं दे सकते, ऑप्शन 2 मौजूद है. मैं आपको जवाब दूंगा. बिल्कुल जवाब देना. देखें, एक तो ये चीज़ है कि अगर आप इस टीम को देखें ना, इसमें 12 प्लेयर ऐसे हैं. जब पाकिस्तान टीम 2 साल तक नंबर 1 टीम रही है तो यही प्लेयर खेल रहे थे. एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि अभी हम सब लोग बात कर रहे थे कि जी वर्ल्ड कप से पहले मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. आई थिंक कि मैनेजमेंट चेंज हुई है तो मुझे ये लगता है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि द प्लेयर जो है ना वो उस वक्त टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं थे. और अभी आप देखते हैं, जब टीम देखते हैं आप, तो आपको ग्राउंड में नज़र आता है कि ये टीम जल होके खेल रही है. दे लाइक ईच अदर कंपनी, दे लाइक ईच अदर सक्सेस. तो वो दोबारा से वो जो टाइम था जब ये टीम नंबर 1 थी, तो वो वाली फील आपको आ रही है. तो आई थिंक कि उसमें डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि मैं कहूँगा सकलैन मुश्ताक को, कि वो बड़ा काम है. उसने, मेरी लड़कों से भी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल से जब वो काम कर रहे हैं तो लड़कों के साथ बड़े कंफर्टेबल थे. एंड देन मैथ्यू हेडन अगर आपके पास आए हैं तो 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, वो अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे होंगे. फ्लेंडर यहाँ पे आए हैं तो वो अपना एक लेके आए होंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेके आए होंगे. तो वो इस टीम को सिर्फ आपको यही चाहिए था कि पॉजिटिव एनर्जी, और इनसे कहें कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑन द फील्ड. बिकॉज हमें ये पता है कि इस टीम में जो लड़के हैं उनमें पोटेंशियल, टैलेंट एंड स्किल सब चीज़ें मौजूद हैं. इस सिर्फ ये था कि उनको बैक करना. आई थिंक सिर्फ और सिर्फ बैकिंग ही हुई है, क्योंकि 7-8 दिन पहले आपके बंदे आए, इवन हेडन तो फिर उसने वर्ल्ड कप से पहले ही ज्वाइन किया क्योंकि वो आईपीएल में बात कर रहे थे. तो आई थिंक इट्स ओनली थिंग मेरे ख्याल में यही चेंज हुई है कि आपने अपनी टीम को बैक किया है, कप्तान को अथॉरिटी दी है कि वो जाके अच्छा परफॉर्म करे. कप्तानी पे कितना असर पड़ा है? लास्ट क्वेश्चन. नहीं, कप्तानी पे डेफिनेटली असर पड़ा है. अगर आप देखें कि बाबर जो है ना बहुत ज़्यादा काम है, अभी वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भी नहीं देखते, अपने डिसीजन जो है ना ऑन द फील्ड वो खुद डिसीजन कर रहे हैं. आई थिंक कि कप्तान जो है ना वो किसी भी टीम का वो रन करता है शो. जो मैनेजमेंट होती है या कोचिंग स्टाफ होता है वो आप सपोर्ट करते हैं, बेस्ट अवेलेबिलिटी जो है आप उनको दे सकते हैं, ट्रेनिंग में उनको फैसिलिटेट करते हैं. कोचेस का काम ये होता है कि उनको फैसिलिटेट करना. एंड में जो है ना वो प्लेयर का काम है या कप्तान का काम है कि वो प्लेयर से अपना रिजल्ट लेना. You rightly said. There is a difference between managements. The one we used to have a manager from some management top guy, and he controls you. What type of shoes are you wearing? What happened to your shape? So that's the focus was army training, some bureaucracy was dominating, and now the franchise cricket and has changed the management styles. And the coaches used to be, or even still few coaches believe that they are having a huge role to play. They wanted to influence on the ground, on the pitch, but they forgot one thing because they are sitting on the chair and somebody else is playing. So the best thing for the relation of coach and a player is that you ask him, what do you want? What can I do for you? So that's a better way of guiding players. So time changes. Now people go around, play leagues, and in leagues, what you don't have much time to control them, teach them, or guide them. You simply ask him, Azhar, what do you want today? How many balls you want to bowl? Where you want to bowl? You want to bowl in the middle, nets? Where you want to bat? So it's like you got a menu card. It's like hanging that breakfast menu outside yes. your hotel. What do you want? What do you want? When you go to sleep, just put it here. So 3 overs, please. When they come back to national, yes. When they come back to the national side, all the discipline. So many people left their national side because of this. So as time passes,
the management, the cricket board has to understand the changes, the time changes, and they should change and move on with the time. But I agree, Aaqib, yeah. one thing, I mean, for different players, it has. Don't you think it has to be different? I mean, if you can, there are some players that might need that discipline No, because, like, we said, are all humans. You're right. So we some. all need Some do, freedom, some do. freedom, and Just look at the studio. Some need discipline. But one's got to understand, right? One's got to understand that there's a lot of T20 cricket being played around the world. And some of these guys are fit anyway from the start. And because of so many franchises, it's tough at times for the guys to get totally involved with sometimes the franchise that they're involved with at present. And it's tough. It's we've had it, Kevin Peterson at the Creator Gladiators. It's tough to get him to come and practice. And I've always felt, sorry? No, it's just no count. And I've always felt, you know, that when you have someone of the stature of Kevin Peterson, it is always so important that you send the right message to the younger individuals around. And it happens so to all of the players who come and represent this franchise, especially when they get good money. Yeah. Right, now in this studio, we operate on a system where I trust everyone to have responsibility for their own performance, to work out what they need to do. Every now and again, we have to get in the way and lead you to a package. So, for instance, we are in fact reviewing this game that we watched today. We're going to just have a look at the way the best of the Afghans are batted. First of all, Mohammed Nabi here, who's an experienced, wily old campaigner, played some fabulous shots. And these were needed, because at 76 for 6, Afghanistan could have been in deep trouble. But this was one of the innings that got them out of it. That's also helpful. Not that cultured, but it goes on the scorecard. And towards the team scores. Wow, I love that shot. That was this is where Shaheen Sharafidi was bowling these fantastic Yorkers. yeah. And that was a very clever sort of use of the feet, get the feet out the way. I mean, See what happens. he's tall, Yeah. and his best ball in the end would be the bouncer or Yorker. It's a good choice of. A great way of playing it. We saw some good shots, you know, like Nabi played a couple of good shots. It was pitched up deliveries, but he played beautiful extra cover shot and little bit luck as well, you know, a couple of edges, went for 4. Yeah. So you need luck in this game. Indeed, it always does. Now the other guy, Gulbadin, he does a bit of this on his spare time, doesn't he? He loves a bit of this. And you haven't got nothing there. But he was bodybuilder before. That's what he's showing. ये मिस्टर He's working on it. He's working on it. He's working on it. जब कैच करने के बाद कर किया ना ये जूनियर था ये मिस्टर अफगानिस्तान मिस्टर अफगानिस्तान रहा है उन्होंने अपनी He was बैटिंग से भी Mr. Afghanistan at junior level. So which means he must have represented when it came to the Asian Games and stuff like that? he was Mr. Afghanistan, so a competition for all the wrestlers in Oh, Afghanistan. He won that. Antigua. That's it. Mr. Antigua and Barbuda. So हम उनका पैकेज देखते हैं. राशिद भाई आप थोड़ा सा बैटिंग के बारे में. गुलबदीन वैसे ही है जैसे हमारे लिए अजहर महमूद हैं. बड़ा ताल्लुक रहा मेरा यहाँ से. पोर्ट कासिम से भी खेले ये शहजाद और ये. और जब हम यहाँ से जाते थे पेशावर से जलालाबाद से काबुल तो साथ होते थे. और उनकी वो जगह भी देखी जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई. अब वो जो हाउसेस से हटा दिए गए हैं तो जाके वो जगह देखी. नबी थे, दोरोज मंगल थे, काफ़ी प्लेयर्स थे. लेकिन ये प्लेयर्स बहुत ज़ाया किया उन्होंने क्योंकि ये टॉप ऑर्डर पे बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं. शॉर्ट ऑफ लाइन कट और पुल बहुत अच्छा है नबी गुलबदीन का. और आउट स्विंग वो बॉडी बिल्डिंग करने की वजह से इनके विंग्स बन गए थे तो बॉलिंग इनकी स्लो हो गई थी. लेकिन जो बैटिंग की है इन्होंने बड़े यूजफुल प्लेयर हैं अफगानिस्तान के लिए. He used to play for Port Qasim also, and Rashid In Latif. Pakistan, Rashid Latif was when coaching. He used to come to Pakistan and play in the domestic circuit also. So this is why Rashid now has big guns. Is that right? Okay, so those are the guys that got Afghanistan out of trouble. Then with the reply, it needed someone to steer the ship, and the captain has had a really good series so far, Babar Azam. He was the man who got his 50 but in a time which, again, sort of people always like to talk about Babar, about the pace of runs, pace that he scores his runs at. Yeah, I think Pakistan has chased 3 matches in a row. They have chased it successfully, but this time it became a bit tense because till the 10th over Babar was there, but the difference was in the last 12 overs there were
4 overs from Rashid Khan, and that puts a little bit of extra pressure on the middle batters when they don't have the balls to come and settle, even though he was superb in anchoring that innings. But the middle order batters, they have that extra pressure that they don't have enough balls, but they have to go for the runs also. Well, Viv, very quickly, how do you see it? If someone plays the anchor innings, but at a reasonable pace, and the others, are they under pressure, or is that just their job to help it along? Well, it depends on how well the guy's going. If you're going well, not similar to what we saw maybe a Lendl Simmons, when Lewis was going at the time, all you need, Lendl could have been still there, so long as he could have been rotating the strike on a regular basis. But if you don't do that, you look stupid. He did. Right, Sana, we have a message, do we not? Yes, we do have, and it's for the polio eradication. Afghanistan, Pakistan उन दो मुल्कों में से है जिनमें आज भी इस बीमारी के असरात पाए जाते हैं और थोड़ी सी रिलक्टेंस भी पाई जाती है कि इसके इलाज के लिए जो ड्रॉप्स इस्तेमाल होते हैं. तो हम सब की आपको रिक्वेस्ट है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, गार्डियंस देख रहे हैं, कि आप ज़रूर इनको इस्तेमाल करें ताकि आने वाली जनरेशन को इस बीमारी से हम दूर रख सकें, माजूरी से दूर रख सकें और वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें. राशिद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये वबा अभी तक है, और वजह ये है कि एजुकेशन आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग नहीं लगाते, कतरे नहीं पीते. उनसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें. और थोड़े अरसे के लिए मैंने डिसेबल के लिए काम किया. वहाँ पे एक बॉलर था जो बैसाखी पे बॉलिंग करता था, अगर उसकी तस्वीर हो तो दिखा दीजिएगा ज़रूर. और वो मतलब कि बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड. इंग्लैंड में भी हम गए थे तो फ्रंट पेज पे उन्होंने तस्वीर लगाई थी उसकी. और इसी वजह से कि पोलियो की जो मुहिम है पाकिस्तान में, उसको हम कामयाब बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कतरे पिएँ. उमर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ऐसे कंट्री के इसमें अभी भी जो पोलियो के जो केसेस है वो अभी भी है. तो मेरे तमाम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और अपने बच्चों को सारी उम्र की माजूरी से बचाएं. मेरे ख्याल से इसमें कोई कबात नहीं है, ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कोई साइंटिफिकली. तो आई थिंक ये अपने बच्चों के लिए ये कतरे पिलाएं ताकि वो सारी उम्र की माजूरी से बचें. अज़हर भाई? हाँ जी, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने कहा, आई थिंक ये कॉज ऐसा है कि हम सबको मिल के इसकी तरफ जाना चाहिए. और जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को जो है ना पोलियो के कतरे पिलाएं और पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल में जो है ना हम उन लोगों को देखें कि वो अच्छी सेहतमंद हों. Do you want to add something? Well, we better just get everyone in, I think. Yeah. Just let everyone go. Aaqib, just a quick word on this, on the polio. Okay, बात ये है कि हमारे चीज़ों को लेके उसको मुश्किल में उसकी दूसरी साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो अगर आप देखिए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा जितने बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये वहाँ नहीं है. तो इसलिए नहीं है कि वहाँ पे भी वो इसको बड़े सालों से इसको फॉलो कर रहे हैं, ड्रॉप्स बच्चों को पिला रहे हैं. तो ये ख़त्म हो सकती है और हम अभी भी इसमें से कोई ना कोई थ्योरी निकालने की कोशिश करते हैं. एक्सपर्ट मत बने, किसी दोस्त के पीछे न लगें, किसी के पीछे न लगे, डॉक्टर से पूछें, जो एक्सपर्ट है उनकी बात माने और इससे आगे बढ़ें. Viv, with your following, if you tell them to take the drops, they will take the drops. It's very important that you do, because it does affect many parts of the world, people around the world. And what I think is quite important now is that we are aware of exactly the things that's happening where polio is concerned. And if we can get all the support that's necessary to make sure that this particular disease in itself is eradicated. Indeed. Spread the word. That's all you have to do. Spread the word. It takes a minute to have a couple of drops in a child's head, as it were, not head, in his mouth. Just put it in this side. A couple of minutes just to get the drops in, and you can save hundreds of thousands of lives. Please do it. We'll take a break. बिजली धुलाइयां वे पावर शाइन ना लाइयां वे जब कपड़े लगे बिल्कुल नहीं
फिर दूसरा पाउडर क्यों? कमांडर पावर शाइन। गोल्डन फ्यूजी गैस और इलेक्ट्रिक गीजर, घर संवारे, प्रोडक्ट्स हमारे।